World War I was started in 1914 between two alliances, the Triple Entente, Britain, France and Russia, and the Central Power Germany, Austro-Hungarian Empire and Ottoman Empire, which even triggered the war, the conquest of German conquest of Poland. It was the starting or spark plug for, मतलब जिसने जो self start दे दिया था, initiator, igniter of World War II, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था. नॉट फॉर वर्ल्ड वॉर वन, एंड इट इज आस्किंग फॉर वर्ल्ड वॉर वन. The assassination, okay, this example we will, chalo, okay, let's do this example first. The assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria-Hungary. Archduke matlab actually it is kind of related to royal family only. Okay, so Archduke Franz Ferdinand, who was he? He was the next in kin or heir to Austro-Hungarian Empire. So next राजा, इससे पहले कौन थे? Karl Ludwig. Archduke Karl Ludwig के बाद he was supposed to be the king, and इनको जब assassination इनका कर दिया गया तो it led to July crisis. अब जुलाई क्राइसिस जैसे ही हुआ, they declared a war on Serbia. अब सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर करने के बाद it was an initiation point of World War I. ठीक है. The attack of Gallipoli by the Australian, like we do all the examples. अभी क्योंकि ये examples भी किसी न किसी के ऑप्शंस हैं, you should know. The attack on Gallipoli by the Australian and New Zealand Army Corps. ठीक है. It was World War I का इवेंट है, बट लेकिन it was going on during World War I. It was not the starting point और इनिशिएटर, इग्नाइटर नहीं था World War I का. ओके, तो इसको ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है. द बॉम्बिंग ऑफ पर्ल हार्बर इन द यूएस, नॉट रिलेटेड. वर्ल्ड वॉर II का इवेंट है, ये भी वर्ल्ड वॉर II का इवेंट है, वर्ल्ड वॉर I से इसका कोई रिलेशन नहीं.